Previous stream had some issues in it, so the issues were fixed. So the new stream has started. Right. Please do join. Link is there. Okay. Code Vita TCS जिसको भी कर TCS Code Vita stream started. Join if you want to join. Basic prep है, do's and don'ts है, and it is the start of the roadmap. I know I'm a little late. 19th को start होगा था, 21st को start हो रहा है, and 1 बजे से 3 बजे का करना है, 1:45 हो रहा है. ठीक है, चलो ज्वाइन करो, जिस चीज़ को ज्वाइन करना. Not disturbing Instagram का टाइम काफी अच्छा है. सो हाँ, अपडेट दे दिया है वहाँ पे. सॉरी फॉर डिले. ठीक है, निकल जाएगा. तो हाँ, 0 व्यूअर्स ही है. एनीवेज चलेगा. तो बेसिकली क्या है ये TCS कोड विटा कैसे करता है? This is what it is gonna be. First few minutes, and then I'll show you the PDF. See, I've compiled a proper PDF 22 pages का है, जहाँ पे सारे previous year questions हैं, उनके photos दे रखे कर रखे हैं, because copy paste करने में issue होता है. So yeah, कोड क्या है पहले तो, and how do you want to tag it? See, I'm gonna be pretty frank, okay? Very frank with this. You cannot use AI tools, and using AI tools is gonna see until unless see, I never used the paid plans of any tools. Okay. So मैं फ्री वाला ही बंदा हूँ. मैं फ्री टूल्स करता हूँ, फ्री में नॉलेज बढ़ता हूँ, सब कुछ फ्री रहता है. ठीक है. तो अभी जो है चैट जीपीटी रहा, तो ठीक है, 2024 की बात हो रही है, अर्ली 2024 की बात हो रही है. You can say that you might be not having those strong AI tools. Might be. But at the end of the day, TCS कोविटा का इंटरव्यू राउंड भी होता है. तो आप कोडिंग करके चैट जीपीटी करके ये ट्राई कर सकते हो, बट इट इज़ अ प्रॉक्टेड एग्जाम. तो सीन क्या होता है, आपका जो ये है, क्या कहते हैं, एक एक पर्टिकुलर प्लेस रहती है where you have to come and write TCS code vita. Okay, I एक second, let me see if I'm sharing my screen. Right. So as soon as you log in or register, you have your email ID वगैरह. एक second, let me just put in my.
you get your one time code. ऑथेंटिकेटर ऐप पे रहता है वन टाइम कोड, अभी एक बार दिखा रहा हूँ तो कर लो। ऑथेंटिकेटर ऐप करके रहता है एंड देयर यू विल गेट टीसीएस कोड वीटा। ठीक है। सो गौरव मित्तल वन वाज माय टीसीएस कोड वीटा। एक से कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ। ओके एक सेकंड, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग फॉर a minute so that people can actually see it. Okay, so if you can see TCS Code Vita Season 12 का है। This is TCS Code Vita for the time being. Just what I guess I can show you because TCS Code Vita is something that you can only write once. Okay, तो एक बार लिखा खत्म हो गया। That is it. So that is it. तो अभी मैं TCS का ये Code Vita का लॉगिन कर देता हूँ। Just log into it using that one time code 216 211. Yep, sign in. So now coming here, you need to first of all fill all of this. I cannot fill all this. तो कॉन्टेस्ट में कैसे रहता है? You get this particular type of second, let me see if I'm sharing. No, I'm not sharing. Okay, who is this one person who's there? हम चैट में बता दे यार कौन है तू। हाँ तो अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है। ये दिस इज ऑल पीएस, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आई कंफर्म आई हैव रेड स्टार्ट कंटेस्ट। ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट कंटेस्ट करते हो, अभी तो प्रोफाइल बिल्ड करने की ज़रूरत है नहीं मेरे को बिकॉज आई एम नॉट अटेम्प्टिंग एट द मोमेंट। ओके, तो हाउ इट वर्क्स इज दिस होल थिंग, यो इफ यू आर मूविंग हियर एंड देयर ऑल टैब मार रहे हो, कंट्रोल W मार रहे हो, प्लस द थिंग विद दिस इज ये जो कॉपी करने का है ना, वो कॉपी तो हो जाएगा बट यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। सो इवन इफ यू आर लाइक, अच्छा अभी जीरो पे आ गए। नाइस। सो इवन इफ यू आर लाइक बेसिकली ट्राइंग टू कॉपी, यू कैंट पेस्ट इट। पेस्टिंग का आप कंट्रोल शिफ्ट आई मार के यू माइट बी लाइक नहीं मेरे को ये एच टी एम एल क्रैकिंग आती है तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट यूजिंग दैट, नहीं काम करना है। प्लस one more thing which I would like to say is try to keep your code funky. Funky in the sense I mean it. Because see, as I near that we did not see or we did not know about other areas from where we can get codes, this, that. Stay away from Telegram. मैं blatantly कह रहा हूँ stay away from Telegram as much as possible क्योंकि Telegram groups बनती हैं where people start selling you the answers. See, I'm telling you frankly, this is just a do's and don'ts session. आपको करना क्या है? ये पीडीएफ है which I will give the access एक गूगल ड्राइव में डाल के I'll be giving the access to everyone. ठीक है। उसके साथ साथ there are few proper videos जो हमारे कम्युनिटी में रहेंगे। My WhatsApp community is open anytime, खुली भी रहती है। उसका भी लिंक रहेगा इस वीडियो के नीचे wherein you guys can join the WhatsApp community. Now, basically, this is just a session where I'm talking and explaining you guys what the scenario is और कैसे चलता है. So, what you need to know is there are people who do that. There are people who hard code it. There are people who do the chat GPT stuff, then start selling it. So stay away from those people क्योंकि तुम्हारा आंसर अगर सेम है किसी से, like if my answer is similar to the answer of three people, only three people, I'm flagged. Okay, so yes, you get flagged, and getting flagged is like you get disqualified. So that is the reason why I've started this. क्योंकि one, आपका thinking process थोड़ा टेढ़ा रहना चाहिए। See, टेढ़ा in the sense I am talking about being unorthodox. Now see, ChatGPT what it does is code देता है,
स्ट्रक्चर्ड कोड नहीं लिखता until unless you ask it, structured and secure code. वो लिखना कैसे है वो हम लोगों ने सीख रखा है हमारे पीपीएस हमारे सी लैंग्वेज के क्लासेस में. सो देयर इज वेयर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना हमने देखा है और हमने सीखा है. नाउ फॉर एग्जांपल we look at this uh, let's see, where is Purvita? Yeah, right. I'll just show the screen. Right. हाँ तो इसका ऑलरेडी मैंने कोड लिख रखा है एंड हाँ इसका कोड ऑलरेडी लिख रखा है मैंने. तो बेसिकली व्हाट इज दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे. दिस क्वेश्चन इज अ सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. नाउ है क्या इसका पर्पस क्या क्वेश्चन का. It wants you to determine on which face of the cube a given point is lying. ठीक है. Now क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. ठीक है. एक 10 into 10 into 10 cube है and it has a beetle on it and some sweet honey spots on various points. ठीक है. तो various points पे honey spots है. It goes from one point to another point, say on the same face. It was in an arc that subtends at an angle of 60 degrees at the center of the circle. So see, this whole question, if you read it as is, you will have no idea what it is. कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है. एंड ये खाली ऑन अ क्यू का सैम्पल क्वेश्चन. एंड हाँ एक और चीज़ जो मेरे को बोलनी है विच इज इम्पोर्टेंट इज TCS कोड has 3 rounds. फर्स्ट राउंड के लिए ये हो रहा है. सेकेंड राउंड का डिफरेंट रहता है. थर्ड राउंड का डिफरेंट रहता है. फर्स्ट राउंड में 6 क्वेश्चन 6 घंटे. दूसरे राउंड में 8 क्वेश्चन 6 घंटे. लाइक हाँ भाई 6 घंटे है वी हैव वन फॉर डे वी कैन डू इट. नहीं होता. फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं होता. लीडर बोर्ड को देखा मैंने. देयर वर पीपल फ्रॉम वासवी कॉलेज. यस क्रेजी अमेजिंग. इंडिया के आईआईटी से थोड़े थे बट देवर पीपल मैक्सिमम जो मेरे को दिखे were people from Chinese universities. Okay, they were from China, and you need to understand this is a global level system. और ये तुम्हारा typical hackathon नहीं है. Normally, I'm a guy who encourages hackathon. This is a coding contest. It is a coding contest, and yes, this is full gonna be low quality. मैं कुछ fancy stuff नहीं कर रहा. It is just so that you guys can understand and go for it. Okay. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉलिड क्यूब. ठीक है. बेसिकली क्या कह रहा. इट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इट गोज इन इट्स टॉकिंग समथिंग. ओके व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज what do we need to code. Okay, so how do you understand that? Simple. First come to the example always has your input and your output. Now here in code vita what you need to observe is what you have a hard time doing is simple. What goodness क्या था वो. हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एक सेकंड जस्ट स्क्रीन शेयर again. Yeah, I'm bad at this. Those time limit is shown 1 second. So like that, there are other time limits. There are sometimes 2 seconds का time limit रहता है. 6 second का भी time limit रहता है. Is there was a problem with the time limit of 6 seconds last Covid in the season 1. Season 12 round 1. No, no. Season 12 round 1. So what I would advise you is to use either efficient languages. Like if you are a hard coder तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. I know you will be coding in CPP. Yes, C, which that is the fastest thing. And people are like,
एंड बहुत सारे मीम्स चलते हैं, अरे जस्ट बिकॉज C plus plus or C is like 400 milliseconds, yeah, 3 seconds faster than Python. People are learning Python. People are learning C and C plus plus. क्या एडवांटेज है? फास्टर है। फास्टर का मतलब ही वो है, these companies they want the processing to be done fast, क्योंकि अभी पाइथन में ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का, ये लाइब्रेरी रन करने का, हर एक ये करने का, एंड सी बेसिकली ऑल these functions will be there in your C also. अपन बेसिक फंक्शन करके डालेंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट यहाँ पे मैथ में स्क्वायर रूट डालना, ये सब करना, basic stuff for which we are using libraries or which we are using shortcuts over here. Like basically you are using short, see, and everything is being run in one shot. वहाँ पे क्या रहता है सी में? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा कैसा रहता है? अरे इसका काम आया तभी रन होगा, नहीं तो नहीं रन होगा। Here everything is whichever thing is being noticed over here or whichever thing is written over that function, whether it is being used or not, it will run. So it takes a longer time. So that is the reason I know CPP and C are not great languages. They are not easy to understand. But I would prefer everyone to do it in that. And then from the next session, everything will be in C and CPP. And yeah, if you see, यहाँ पे भी constellation का, so see, this is the basic. It's a 32 page long thing. Okay. So important topics and code vita questions में है. So code vita questions में here we can see the constellation, and here we can see that it is being solved in C++ language. Now over here, not only, okay, you can say C++ language, then Java language is going to be used, then again C++. So the usage of this language is high because it is good with the time complexity. Okay, यहाँ पे main thing which you have to encounter and which you have to come across and overcome is time complexity. Okay, so I won't keep this long क्योंकि 2:05 हो चुका है ऑलरेडी, और अभी तो इसको एडिट करने का ज़्यादा है नहीं मेरे को। आई जस्ट पुटिंग this as is on the channel. I won't be editing much because थोड़ा लेट हो गया है, हैकाथॉन वगैरह का सबमिट कर रहा था। सॉरी फॉर दैट। yeah, people were like भैया ये इतना टाइम इतना लेट क्यों है? It is late for a reason. Like I want people with commitment over here. कि I'm preparing, I'm doing it again. Although देखो I can't write this exam anymore. So normally जो भी लोग अभी देखेंगे, if anyone watches, you guys are normally my juniors or my batchmates, or the people whom I know through other hackathons. That's it. There's gonna be nobody else who's gonna be watching this video. So, and if anyone is interested in TCS Core Beta, that is why I made this series. I've started this because of that. Most people were like, आओ भैया बताओ, आ गया बता रहा हूँ. I can't take one-on-one classes. All I can do is this. And on Sundays it will be 6 to 7. मैं रात का शाम में कर लूँगा, उसमें इशू नहीं है. बट सैटरडे संडे छुट्टियाँ हैं कॉलेज में तो मेरी, तो हो जाएगा सैटरडे संडे का. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज till third. See, my main objective is once मैं just screen entire screen पर import हो गया. Uh, yeah. So third is the deadline. That's what you need to know. Third is the deadline. So how many days do you have? Like if you take this is 7 days. 8, 9, 10, 11, 12.
Okay, so basically we have 12 days. I'm writing it in the chat so that if somebody wants 12 days left means 12 days left for you to knock your head on. How am I going to prepare? And am I actually prepared to write this exam? Or you see, that is the registration deadline. That is not when the first round is happening. What I want everyone to get clear is that they are ready to go for it this time. Okay. आई एम मातृश्री के ही बच्चों के लिए ज्यादा बाकी लोगों को आना है आओ फ्री है नहीं आना मत आओ मर्जी है आपकी सिंपल एज दैट ओके तो हाँ ये इंट्रोडक्शन जो है तय रहेगा अभी शाम को आज वापस टुडे इवनिंग ओनली 7 or 8 I'll be starting another live stream and what I'll do is I'll take up one of these topics. Okay, one second. I'll just show these topics. ये topics का screenshot ले लो सब at the moment as soon as possible. ये important topics. Okay, बराबर दिख रहा है क्या ये important topics? हाँ. So these are the important topics. अभी max flow problems हों तो segmentaries हों तो dynamic programming रहने दो. Then see, uh, we have learned about Rabin Karp algorithm also, Z algorithm also. But KMP algorithm का अपने को idea नहीं है why it is used, how it is used. So you will find a lot of stuff over here. देखो pattern matching, pattern searching is one different thing, okay. But Dijkstra, Kruskal's, coin problem, sum problem, subset sum problem, knapsacking, all of this is stuff that is in engineering. Okay. And it is in the coding phase of engineering itself. CSE के coding phase में ही है ये सब. These are algorithms that help us understand how to solve problems. So TCS code beta, you need to understand one thing. Problem solving पे ही है तुम्हारा एप्टी नहीं. तुम्हारा इंटरव्यू स्किल्स वो बाद में रहता है. That is after you are shortlisted and after you get your rank, you're shortlisted and then you go कि हाँ भाई हो गया मेरा टाटा बाय बाय इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ. तब अलग बात है. दैट टाइम इट विल डन डिफरेंट. तब भी यहीं पे रहूँगा कहीं जा नहीं रहा. ओके तो चलो I'm sleepy. So hopefully meet you guys at around 7 to 6. Okay. Chalo bye guys. I should change this. Mirroring effect बड़ा अजीब है. Anyways. Yep.